मतलब is this rise something unusual? So the tendency to develop cancer is higher. Right. But certain cancers they occur particularly in a particular decade. I think difficult to say why it is occurring, but uh, one reason is probably hereditary. There is some gene in the family which is transmitted from one generation to the younger generation. The causes of cancer are different in a developing world, they're different in a developed world, and they're different in an underdeveloped. Addiction is the most common cause, is what the Yeah, data it will says. remain everywhere. Addiction will be all over the world. So like average Indian 9 बार बाहर खाता है, 9 Okay. times he would eat outside. और जो 81 times घर पे खाते हैं, तो हमने घर को भी होटल बना दिया है. Yes. You see what are the three things? One is discipline. Discipline means what? The ability to say no. Oh, exactly. जैसे आप कह रहे हैं, attention span has decreased, हाँ. stress levels have increased. So how does this stress level, does that relate somewhere to the incidence of cancer? So hello and welcome everyone to our channel Let's Learn Oncology with Dr. Veer, and today we are going to shoot our first podcast with Dr. Shirish Alurkar sir, who is a medical oncologist, leading practitioner in Ahmedabad for the past 30 years. And he has been treating and he has treated maybe thousands or lakhs of patients and has been a part of so many patients in their cancer journey. So we welcome you, sir. So on a starting note, would you we would like to know more about you, our viewers particularly. So आप अपने बारे तो में जैसे कुछ कि आपने बताएंगे? बताया, मैं मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट इन लास्ट 30 इयर्स अहमदाबाद में, एंड आई डू कीमोथेरेपी. डॉक्टर वी डज द सर्जरी. मैं खाली कीमोथेरेपी, इम्यूनोथेरेपी करता हूँ. आई एम मेनली वर्किंग विद HCG कैंसर सेंटर अहमदाबाद. ओके ओके सर. सो व्यूअर्स के लिए, सो ऑन्कोलॉजी के अंदर देयर आर 3 पार्ट्स. आई हैव ऑलरेडी सेड दिस इन माय प्रीवियस वीडियोस. वन इज सर्जरी, सेकंड इज कीमोथेरेपी या डोज या इम्यूनोथेरेपी, एंड थर्ड इज रेडिएशन जो शेक देते हैं वो. ओके. सो जब हम देखते हैं आजकल, लाइक आई एम वेरी न्यू टू दिस फील्ड, एज आई से मैं 4 साल से आई एम इनटू द फील्ड ऑफ कैंसर. सो आई डोंट नो वेदर उसके बाद या क्या, बट रिसेंटली जब मैं देखता हूँ तो इन द पास्ट 4 years itself, except the patients that I have treated at my primary hospital, there have been thousands of patients, but मेरे जो फैमिली और फ्रेंड्स है उसके अंदर ही आई हैव बीन अ पार्ट इन द कैंसर ट्रीटमेंट और कैंसर जर्नी ऑफ एटलीस्ट 20 पीपल जो मेरे पहचान में इन है. योर फैमिली. मेरे फैमिली, मेरे फ्रेंड्स Yeah. के फैमिली, जिन मतलब इज दिस राइज समथिंग अनयूजुअल या फिर ऐसे सच में यू हैव आल्सो ऑब्जर्व्ड इन योर 30 years के recent 5-10 years there has been a rise? So as you rightly said, last 4-5 years, maybe 10 years, maybe, but mainly last 4-5 years, I've seen that practically every family has one cancer patient or a survivor. So now you cannot escape cancer. That's what I said. So even it's not as maybe more common than a heart attack, but cancer, yes, everyone. So maybe one of the reason is people are coming forward for diagnosis. We are getting more facilities. There are good diagnostics laboratories, radiology, X-rays, scans. People are more aware. But again, there is a segment of people who are not really aware of this and they want to shy away from a diagnosis. For example, they know there is an ulcer in the mouth, but they know there's something suspicious, but they will not come forward to a doctor for that fear complex. Right. So that is there. Yeah. So even as we go to the history books, a lot of the freedom fighters, like even Napoleon Bonaparte, he was suffering from cancer. So it is not something I that didn't know is- that. Huh? Okay. it is not something that is new. It has been there for, I guess, at least as we go into the books of history, for 405 years here, 100 years, Yeah. or even more. Mhm. But recently, maybe as you are saying that maybe the diagnosis has improved or overall the incidence has improved. Mhm. One other thing that what I can see is that our average life expectancy. Mhm. पहले people used to live Yeah. somewhere close to an average is 50-60 साल. 50s, yeah. अभी 70 साल, 80 साल, 90 साल. So certain cancers they present late only. Late, yeah. क्योंकि body जैसे grow होगी उसकी repairing capacity भी will not be that good. Right. So is that also one reason? So that is one of the disadvantage of living long, longevity. So you live longer, you have more problem. Of course, diabetes
and heart, if at all, will come within the 40s, 50s. So if you cross say 60s, you rarely get a heart attack, or even you rarely are diagnosed with diabetes. But cancer, yes, it increases. One of the reason is because as you age, there are more mutations. Mutations means abnormalities in the genes which come up, Okay. and these occur as a natural course. It's like your hair getting gray or your bones getting brittle. Same way, the genes also get abnormal as you age. So the tendency to develop cancer is high as long as you live. So longer you live, you have this problem. Yeah, that is logical. So I think that is one of the reasons. Right. But when we talk about age, what another trend that is there and that has been given in a lot of papers also, कि बहुत सारी जगह पे लिखा है कि एक एवरेज एज जो कैंसर डेवलप हो रहा था आज से 10 साल पहले 20 साल पहले, सम कैंसर्स ऑफ कोर्स हम छोड़ देते हैं वो कैंसर्स जो फर्स्ट और सेकंड डिकेड में होते हैं, Right. बट सर्टेन कैंसर्स दे अकर पर्टिकुलरली इन अ पर्टिकुलर डिकेड, कि फिफ्थ सिक्स डेकेड के बाद जैसे प्रोस्टेट कैंसर होता है, फोर्थ फिफ्थ डेकेड के बाद ब्रेस्ट कैंसर होता है, तो वो सारे जो कैंसर्स है देयर इंसिडेंस इन यंगर पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग डे बाय डे. ऐसे भी स्टडीज है. Yes. एंड they are at least a decade or 2 decades earlier Than the usual. Yes. matlab not all patients of course, but a lot of the cohort of patients, unka jo presentation hai, it has become a decade or 2 decades earlier than it was previous. So younger population mein cancer is increasing. That is really alarming thing, is what I feel. I think difficult to say why it is occurring, but one reason is probably hereditary. There is some gene in the family which is transmitted from one generation to the younger generation. These are all hereditary cancers to some extent. We still have not identified all the genes, although a lot of studies are there. For example, recently we had a case of a 22-year-old CA breast cancer. Another was just 24. Now she has intestine cancer with metastasis. So very unusual, but they are there. Yes. Why it is occurring? Probably there is some genetic. We have done the genetic test of both of these. Nothing has really come out significant. So still we don't know what is the reason. And because that is, it takes a toll on the family. मतलब 22 साल का 24 साल Yes, के yes. the people who are living with cancer, and as I know as a cancer surgeon कि the younger it presents, the bad is the prognosis. Yes. मतलब वो जो younger age में present होता है तो prognosis bad होता है. आप उस पे कुछ light. Yeah, so if it were very young, less than 10, 12 years, the younger, better it is. Like if you say blood cancer, you take some tumors of this kidneys. In the children, they are potentially curable. So that is there. But if you go beyond that, say 15, 18, 20 years, that is what we call AYA, so adolescent, young, and cancer. So AYA, that is a group which is very much, they have these tumors are more aggressive, they tend to spread faster. They come in a late, when you diagnose it's already in the third stage. So they are very aggressive tumors, difficult to treat many times. So as you rightly said, yes, younger the age, adolescent or very young, say 20s, 30s, the cancers are more aggressive, more violent. Okay, so जैसे आप बात कर रहे हैं about hematological malignancy या blood malignancies and solid organ malignancies, तो आपने दोनों में ये ट्रेंड देखा है कि यंग जो ब्लड मैलिग्नेंसीज है दोज आर आल्सो इंक्रीजिंग और ओनली द सॉलिड ऑर्गन आर इंक्रीजिंग? ब्लड में ज़्यादा फर्क नहीं आया, थोड़ा उतना ही रहा है, मीन्स दैट इज इन द यंग एज. सम कैंसर्स लाइक फॉर एग्जांपल क्रोनिक माइलॉइड ल्यूकीमिया, जो क्रोनिक टाइप ऑफ कैंसर है, व्हिच इज इन द एल्डरली, मे बी 30s 40s में आता है. बट ALL, acute lymphatic leukemia, mainly in the pediatrics. Adults में भी होता है, but hardly 5-10% incidence है. That has not changed. What has changed is the incidence of solid tumors, जो बोलते हैं non blood cancers, coming down. So the age affecting these, these people are younger now. Like I mentioned, 22, 25, they're unusual which you get these cases. So anyone below 40 years, आजकल definition के हिसाब से, they are considered to be young adults. That is the definition. ओके, पर उसके अंदर ब्लड में जो मैलिग्नेंसीज होती है उसमें कुछ आपने ट्रेंड ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा, आई डोंट थिंक. हाँ, ज़्यादा फर्क नहीं. ओके, एंड द प्रोग्नोसिस व्हेन वी टॉक अबाउट जो ब्लड कैंसर्स का होता है उसमें भी यंगर एज में इट इज बैड एंड एल्डर एज में इट इज गुड, ऐसा कुछ है? या अगेन डिपेंड्स. ऐसे मैंने बोला कि यंग पीडियाट्रिक में देयर आर ट्यूमर्स लाइक लिम्फोमास, बर्केट्स और नॉन बर्केट, यंग ALL, acute lymphatic, blood cancer, they're curable. ओके, So that depends what age diagnosed हो रहा है. सेम ALL पीडियाट्रिक में वर्सेस ALL एडल्ट में, एडल्ट विल नॉट डू वेल. उसके Okay. चांसेस ऑफ रिस्पॉन्स आर पुअर, उसके चांसेस ऑफ कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा होते हैं, उसके मॉर्टेलिटी भी ज़्यादा होती है.
complications. So, but बच्चों में somehow they do very well with chemotherapy. ओके मतलब आई थिंक दिस नीड्स टू बी अंडरस्टूड बाय अ लॉट ऑफ पीपल बिकॉज जब हम बात करते हैं कैंसर सो इट कम्स एज अ बिग वर्ड कैंसर Hmm. पर वी एज वी नो वंस वी एंटर द फील्ड कि कैंसर आर ऑफ सो मेनी वैरायटी कितने टाइप के कैंसर Right. है और एक कैंसर जो है एक ब्रेस्ट कैंसर ही है वो भी कितने टाइप्स का हो सकता है Hmm. और उसका प्रेजेंटेशन क्या है कौन से स्टेज में हो सकता है अलग अलग स्टेजेस में हो सकते हैं उसके हिसाब से प्रोग्नोसिस कैन बी फ्रॉम वेरी बैड टू वेरी गुड Yeah. So it's a big spectrum. Yes. Yeah. 180 degrees. So it is not a single word cancer. No. Huh. Like जैसे once I grew up, a lot of our viewers I think would relate कि ऐसा बोलते थे कैंसर मतलब कैंसर. Cancel. Huh. Now that has changed. That is gone now. Huh. That is gone. Huh. But overall cancers have increased. कि पहले Overall जो cancer. कभी कुछ सुना होता था कि हाँ ऐसे सुन लेते थे कि कैंसर आया और कैंसर सर्वाइवर्स की भी स्टोरीज ऐसे होती थी वो सर्वाइव कर गए. Hmm. वो दोनों चेंज हो गया कैंसर्स भी बढ़ गए कैंसर सर्वाइवर्स भी उतने ही बढ़ गए हैं. Yes. आई थिंक दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज. Yes. And these are the survivors who go in the society and they tell people that there's nothing to be afraid of, take treatment. But unfortunately in India I've seen there is a taboo. एक बार कैंसर का वो थप्पा लग गया कहीं पर छाती पे या सिर पर दे टेंड टू बी शाय दे डोंट वांट टू कम आउट. हम बोलते हैं पेशेंट्स को आप आके जरा बात करिए सब दूसरों को प्रोत्साहन इंस्पिरेशन दीजिए व्हाट यू हैव अंडर वेल नहीं नहीं हमें नहीं आना है वो पूरा चैप्टर में भूल जाना है अभी पास्ट में. So they don't come out, unfortunately. I told it because cancer emotionally, physically, mentally takes a toll. And they want to forget that part of life. Chemotherapy लिया, surgery हुआ. Because when you see about other cases like cardiac condition, एक bypass surgery भी अगर patient करा देते हैं, तो क्या है generally वो करा के they will go home and they will start recovering. इधर treatment ही इतना लंबा चलता है, फिर recovery भी हो जाता है, but it is difficult. Bypass surgery में the funny thing cardiology में the first thing people will ask किससे bypass किया. So the more famous the surgeon your status goes up. कैंसर में ऐसा नहीं है. No one asks किससे सर्जरी की कहाँ सर्जरी की. Just funny part. Yeah, definitely. Okay sir. तो हम अभी अपने नेक्स्ट सेगमेंट पे जाते हैं. दिस वाज बेसिक इंट्रोडक्शन और क्या अभी जो कॉजेज है कैंसर के. So as I talk about as the world is developing, so there are the causes of cancer are different in a developing world, they are different in a developed world, and they are different in an underdeveloped world. So when we talk about Africa, तो वहाँ पे तो अभी बेसिक फैसिलिटीज ही नहीं है तो लॉट ऑफ वैक्सीन जैसे सर्वाइकल कैंसर का है कि इट इज ऑल रिलेटेड टू hygiene water and some other causes like that of course जो डिटेक्ट ही नहीं हो पा रहे and all of that. When we talk about western countries जहाँ पे already developed है so there the causes are different. When we talk about India our causes are different. आप उस पे कुछ बोलना चाहेंगे? So it all depends on geographical, partly genetics. So you have the Caucasian race, you have the Asians. Caucasians are the Westerners, the गोरे लोग बोलते हैं. And you have the Asians जो हम हैं. Again, Asia में there is a division between the Chinese Asians and the Indian Asians. There is some difference in. So there is basically it's a genetic means जन्म से ही फर्क होता है. Okay. That is one thing. Then your food intake, your atmosphere, पानी के साथ है everything, your habits. फॉर एग्जाम्पल इंडिया में देखा जाए तो यू गो टू ईस्ट पार्ट ऑफ इंडिया तो वहाँ दे ईट बर्न्ट मीट रेड मीट कुड बी चिकन पोर्क और whatever. So वहाँ because of this burnt meat they have high incidence of esophageal stomach cancers, sometimes even liver cancers. liver में infection हो जाए तो they have liver cancers also. So these are the geographical distributions. If you go down south India में you will have a lot of esophageal cancer, annalika cancer, maybe because of ज़्यादा तीखा खाते हैं, that is what they presume to some extent. That so now what is interesting is these same people who have gone from say India or China to US in a young age, they develop the cancers which are not related similar to what you see in India. Okay. They will develop cancers similar to what you find in US. Okay. That is what is shown in many of these studies. For example, like smoking, they will develop some other lung cancers because of the habit and whatever. So it's a change of habit, change of lifestyle, food, everything. And even environment. An environment. So yeah. if someone in east of India would have developed say liver cancer or say esophagus cancer, he doesn't go, but if he's in childhood he goes to say US, he develops a different cancer which is not usually similar to what he's seen in the original place.
right. Like we also see a lot of the gallbladder cancers, they are related to the northeast. Northeast, A lot yes. of the stomach cancers, they are related to down south. Right. So So I think that way, there's a gallbladder belt, in yeah, where Ganga or somewhere, I think Yamuna or Ganga, that yeah, whole, yeah, that yeah. is supposed UP somewhere. Yes. Yes. So majority of those patients, and when you go there also, you find a lot of those patients. Yes. But then there are certain cancers which are spread out evenly across the world. Huh. Like I think breast, Breast would be even lung to some extent, yes. Although lung colorectal. incidence is decreasing in US because smoking is decreasing. Mhm. Colon, yes, it is increasing. More or less, it is same here. Prostate is increasing. That is Mhm. one cancer which is there. Okay. And जब when I also went through a lot of research, तो उसमें मैंने देखा कि Western population जो है, they were more of addicts, and the Mhm. cancers also there were more related to the addiction. Right. Then they developed all of that no smoking campaigns, and they did a lot of screening trials. They related smoking to all that, so they spread awareness. Mhm. So initially smoking was a cult there. फिर उनको लगा कि नहीं इससे ये हो रहा है, तो वो awareness फैली. So awareness overtook the cult of Right. smoking, Right. and that decreased. But then eventually the lifestyle causes increased. Right. So right now the most common cause in the US and in the Western countries is not addiction; it is Mhm. lifestyle. Lifestyle, yeah. But when you talk about India, which is developing, again, we are influenced by a lot of pop culture, cult. So a lot of people, whatever is shown on the ads or whatever is shown in the movies, Social media, yeah. yeah, they would consume that. If a celebrity they think of very highly of, and he is promoting some brand, Hmm. so they would consume that. So in India, still addiction is the most common cause, is what the Yeah, it data will says. remain everywhere. Yeah. Addiction will be all over the world. Yeah, but then again, when you talk about India with so much variation, Mhm. we have all strata of people. कुछ ऐसे लोग हैं जिनको समझ आ रहा है कि नहीं ये गलत है, so now they are also going towards no addiction. And when the lifestyle, or what I think is the comfort level, improves, they, in that particular strata of people, again the lifestyle factors are coming up. Hmm. So as we discuss first about the lifestyle factors, then we'll go towards addiction. So lifestyle factors में जैसे बोल दिया कि हाँ lifestyle आपकी है, ठीक है, but then there is so much content available online, Yeah, on and lifestyle, yes. no expert is properly guiding. So I think हमारे conversation के बाद we at least have that thing कि what is actually right, what is actually wrong. So we'll start point by point. So first हम बात करते हैं regarding diet. Okay. So जब हम डाइट की बात करते हैं, तो they always say कि Indian food is all staple food. Now डाइट में ऐसा क्या चेंज आया है? बिकॉज ऐसा तो नहीं है कैंसर अपने आप बढ़ा है. देयर हैज बीन सम थिंग्स व्हिच हैज लेड Yeah, of कि course. बॉडी रिपेयर नहीं हो रही है. बॉडी कह रही है ये मत करो, आप फिर भी वो कर रहे हो. इवेंचुअली बॉडी इज रिस्पॉन्डिंग एंड कैंसर्स आर हैपनिंग. सो डाइट में हम क्या गलत कर रहे हैं एज अ सोसाइटी? व्हाट रॉन्ग आर वी डूइंग इन डाइट? So directly you cannot say कि ये खाने से कैंसर होने वाला है ऐसा, of course. एग्जैक्टली. But basically it's all together. You can't say just because you're eating too much of fat you become obese and you develop cancer. Not all obese people develop cancer. So obesity and motapa is a risk factor for cancer, but not everyone develops. That Okay. also is not explained. But lifestyle would include everything: the diet, exercise, sleep, which I think you will be covering up. But diet में देखा जाए तो because of the last decade, you can say easy money availability. Young India has a young generation. I think youngest generation in the world. So they are all susceptible or amenable to what is shown in the social media. Eating fast foods, Coca-Cola. That Coca-Cola पीने से you get energy, you are a hero. So that sort of thing. So then you have that which is that ad कि what is that thing? मरने से पहले जी लो, all those things. So all those things, all those ads are coming on the social media. So it gives that sort of kick that so I'm taking this smoking. So they have that imagination कि ये पीने से ये लेने से you will feel good. So these are all lifestyle changes. सो बेसिकली व्हाट आई अंडरस्टैंड, आप कहना चाहते हैं जो प्रोसेस्ड फूड्स है, Yeah. वो जो ऐसे फैट्स है या शुगर है जो इसके अंदर होता है, जो हाई अमाउंट दैट इज कंज्यूम व्हिच द बॉडी डज नॉट रिक्वायर, Hmm. और आप खा रहे हो बिकॉज, या आप कंज्यूम कर रहे हो बिकॉज ऑफ वट एवर यू Yeah. थिंक, या आपको जो सिखाया गया है.
So that is a bad point, सो right? अगर शुगर में वैसे देखें तो देयर इज अ मिसकॉन्सेप्ट कि कैंसर होने के बाद बिल्कुल शुगर नहीं खाना है. Okay. वी सी दैट पेशेंट टोटली दे स्टॉप शुगर, दे बिकम वीक, दे लूज वेट, कुछ भी मिठाई नहीं, नथिंग. एंड व्हेन यू आस्क देम आफ्टर 2-3 मंथ्स क्या हुआ, तो मैंने टोटली शुगर बंद किया. दिस इज नॉट द वे. यू नीड कार्बोहाइड्रेट्स, यू नीड शुगर, ग्लूकोज फॉर योर एनर्जी, फॉर योर मशीन चलाने के लिए चाहिए आपको ग्लूकोज. यू कांट टोटली स्टॉप. हाँ, Exactly. आप चाय में 3 चमचे डालते हो तो 1 चमचे डालिए, डेफिनेटली डू इट. बट Okay. दैट पीपल हैव दैट कॉन्सेप्ट कि व्हाइट शुगर से कैंसर बढ़ेगा, ये बढ़ेगा. यू नीड शुगर टू रन योर मशीन. मतलब वही है जो हमारे जो बोलते हैं कि जब आग लगी तब पानी अब ढूंढने जाते हो हाँ, आग और उधर. दूसरा ये भी है कि नॉट शुगर मीन्स स्वीट, जो अपने सफ़ेद शुगर जो होते हैं वो भी नहीं. इफ़ इवन आप नमकीन खाते हो, हाँ. ऐसे भी पेशेंट्स हैं, मैंने शुगर बंद की, मेरे को और क्या खाते हो, ड्राई फ्रूट्स खाते हैं, नमकीन खाते हैं, एवरीडे नमकीन का, नमकीन में ऑल्सो लॉट ऑफ शुगर इज देयर, हाँ. वी दे डोंट रियलाइज. दैट इज वेयर द प्रॉब्लम स्टार्ट्स. मतलब भी बेसिकली हम पढ़ते नहीं हम क्या खा रहे हैं. हाँ. बेसिकली हम हमारे माइंड को सेटिस्फाई करना चाहते जीप हैं. जीप हाँ, मतलब जीभ जीप. को सेटिस्फाई करना चाहते हैं शुगर. पर बाद में जब हमको रियलाइज हो गया अभी ये नहीं खाना है, तब माइंड को सेटिस्फाई करना चाहते हैं कि नहीं मैं अच्छा खा रहा हूँ. हाँ, राइट. बट अच्छा खाने के लिए बेसिकली व्हाट आई फील इज हमारा जो घर का खाना है विच हैज बीन गोइंग ऑन. So recently I was listening to this podcaster or YouTuber, Food Farmer. हाँ, या इज अ वेरी गुड वन, वेरी इन्फॉर्मेटिव. या तो उसने वही कहा था कि एवरेज हमारा 90 मील्स होता है इन 30 डेज, एक महीने में ब्रेकफास्ट लंच डिनर 90 मील्स. 90. हाँ. तो एक एवरेज इंडियन 9 बार बाहर खाता है. 9 Okay. टाइम्स ही वुड ईट आउटसाइड. हम्म. तो वो जो 9 टाइम्स बाहर खा रहे हैं उसका इश्यू नहीं है, ठीक है, वो क्या भी खा लिया, बॉडी विल That's fine. रिपेयर इटसेल्फ. और जो 81 टाइम्स घर पे खाते हैं, तो हमने घर को भी होटल बना दिया है. यस. तो घर के अंदर जैसे आप कह रहे हैं ये नमकीन है या फिर बहुत सारी शुगर वाली चीजें हैं, बिस्किट्स है, जो घर के अंदर पहले हम थोड़ा बहुत नाश्ता करते थे, रोस्टेड बनाते थे, उसकी जगह घर के अंदर ही हम इतना वो खा रहे हैं कि इवेंचुअली इट इज टर्निंग आउट टू बी बैड Detrimental, फॉर yes. आवर बॉडी. डू यू एग्री टू दैट? या सो क्विक फिक्स बोलते हैं ना, घर पे आपको कोई भूख लगे, अपना यू फील दैट अर्ज टू ईट, जो भी मिले खा लो, नमकीन हो खा लो, खारी बिस्किट खा लो. सो दीज आर द थिंग्स व्हिच विल कॉज मोर प्रॉब्लम. सो टू बी रियली कंट्रोल, रियली आपको एक मन का संतुलन रखना पड़ता है, क्या खाना है क्या नहीं खाना है. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. या बट जैसे अगर देखो नाउ आई व्हेन आई रिलेट एंड व्हेन आई टॉक फ्रॉम द अदर साइड कि right now we are growing as a society. All women of the house are also going to work. Men of the house are also going to work. Everyone is having so much stress to establish their career. They have to look after their kids. घर का भी काम देखना है. It is not a traditional society that is used to be that the man of the family will go to earn. The woman of the family would stay at home, manage the family, cook the food, take care of the kids. अभी इसके अंदर this has ought to happen, right? You everyone उसके बाद कैसे आप बैलेंस करेंगे? Everyone cannot afford a cook. क्योंकि इतना अर्न ही नहीं कर पा रहे. कुक अफोर्ड नहीं कर सकते. कुक अफोर्ड भी कर लिया तो नाश्ता तो बाहर से ही आने वाला है. So is there any other way that we can stop this from happening according to you? डिफिकल्ट टू स्टॉप. सी कुक भी रखना भी खराब नहीं है, खुद करना भी खराब नहीं है. गुड. व्हाट इज इंपॉर्टेंट, आपको यू हैव टू कंट्रोल व्हाट यू वांट टू ईट. आपको कुक को बताएंगे चलो आज ये नाश्ता बना लो, आज गरम बना लो. यू आर यूज्ड टू दैट गरम नाश्ता. कि अभी फॉर एग्जांपल इफ देयर इज अ हाउस वाइफ एंड हर हस्बैंड इज गोइंग टू कम शाम को साहब आने वाले, ये बना दो, शाम को साहब आने वाले, ऑन द नेम ऑफ साहब एवरीथिंग गेट्स डन. हाँ, सो दैट्स द प्रॉब्लम. चिल्ड्रन भी खाते हैं, यस, बट व्हाट प्रॉब्लम व्हाट हैपन, जो बच्चाओं को चाह होता है ना, हु ईट्स दैट, द हाउस वाइफ ईट्स इट. बिकॉज शी डजंट वांट टू थ्रो इट. शी उन्होंने मेहनत की है, मेहनत करवाई है किसी से, देन शी ईट्स. सो जो बच्चा को चाहे शी ईट्स. सो अल्टीमेटली व्हाट शी ईट्स मोर. दैट इज वेयर द कंट्रोल पॉइंट शुड बी देयर. कि जो बच्चा है वो नहीं खाना है, आइदर यू थ्रो इट और गिव इट टू आपके काम वाले को दीजिए, किसी को दीजिए, सफाई वाले को दीजिए, बट यू डोंट ईट इट जस्ट बिकॉज यू डोंट वांट टू थ्रो इट. वो मन में एक कंट्रोल चाहिए. ओके. और इसके अंदर जैसे व्हेन वी टॉक अबाउट डाइट, तो मे बी वी आर टॉकिंग वेरी मच अबाउट वर्क लाइफ बैलेंस, कि काम क्या कर रहे हो, पर्सनल लाइफ में क्या दे रहे हो. उसके अंदर हमारी बॉडी का बैलेंस वी डोंट मच टॉक अबाउट. लाइक व्हाट आई फील इज कि जो हमारी खुद की बॉडी है, जैसे यार आवर किड्स और आवर पेरेंट्स आर रिस्पॉन्सिबिलिटी, आवर पेशेंट्स और वर्क इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी. तो उनका ध्यान हमको रखना है. और हमारी बॉडी का ध्यान तो और कोई नहीं रखने वाला है, हमको ही रखना है.
So isn't that very under talked about वर्क लाइफ बैलेंस या कोई खुद का बैलेंस, आप खुद की हेल्थ का बैलेंस कैसे करना है? वर्क लाइफ बैलेंस आजकल बहुत कंट्रोवर्सी है, मेनी इश्यूज आर हैपनिंग इन कॉर्पोरेट वर्ल्ड, ओके, आपने देखा वो सुइसाइड्स हुए हैं, those the corporate, some young girls have suicide because they have been asked to work more. But work life balance, it is up to you how you want to do it. ठीक है, काम तो आता ही रहेगा, every day you see you have lot of work at home. आप घर इधर भी बैठेंगे तो क्लिनिक में you have lot of work, ये साफ करना है, वो नहीं ये नहीं, many things. Now you have to define कि मुझे अभी next 1 hour ये करना है, अभी मुझे 7 घंटे तो सोना ही है मुझे. आप बोलेंगे नहीं, मैं 12 रात को 12 बजे तक फिर मैं थोड़ा साफ सफाई करूँ, फिर सोएंगी, and then I will get up at 6 o'clock, then it is not right. So that system, work life balance doesn't always means ki just to little bit of work, have relax. It's not that. Working itself is a relaxation in a way. आपको अगर पैशन है साफ सफाई करनी, घर में कुछ काम करना, कुकिंग फॉर एग्जांपल, you want to do some drawing, this is work, but it's a passion. So that is what, not necessarily that you should always just chill out sofa पे बैठ के टीवी, that is not relaxation. And wafers खाते हैं, some कुरमुरे खाते हैं, that is what I say. And that mindset has to change. Mindset, you have to define what you want to do, you have to be very clear, that is important. मतलब opportunities are going to come in everywhere. They'll always come, हाँ, work will always be there. You are born to work, ये समझना है. So कैसे आप घर को, खुद की सेल्फ को और वर्क को और फाइनेंसिस को सब मैनेज करते हो? That holistically can define of how maybe we can combat this, and maybe how you can keep yourself healthy physically and mentally. Another thing, if you see what are the 3 things, one is discipline. Discipline means what? The ability to say no. कि मुझे ये नहीं करना है, I don't want to eat this, मुझे अभी जागना नहीं है, I want to sleep. No, you should learn how to say no to certain things. कि मुझे, suppose like usually commonly लोग सोने से पहले YouTube देखते हैं, WhatsApp देखते हैं, some sort of they keep on browsing, what is known as that nowadays that new word has come, what is brain rot. So there's a new word in 2025 which has come, that is known as brain rot. So basically you are scrolling continuously, ऊपर जाइए, all useless things. So you have to learn to say no, कि भाई 9 साढ़े 9 बजे मैं YouTube WhatsApp नहीं देखूंगा या नहीं देखूंगी. Instead of that I will read something for half an hour. उससे अच्छी नींद आता है. So you have to learn to say no to yourself and to others also. Exactly, जैसे आप कह रहे हैं attention span has decreased, हाँ, stress levels have increased. So how does this stress level or whatever you are saying, whatever we are consuming, does that relate somewhere to the incidence of cancer? Directly, see, stress will not relate you to cancer, but stress से क्या होता है कि your sleep pattern changes, you may not be able to sleep properly. So when you don't sleep properly, you tend to eat more, you go into depression. So it's a vicious cycle. Depression में आप ज़्यादा खाने लगते हो, और सपोज अच्छी नींद नहीं हो तो नेचुरली आप सुबह उठ के एक्सरसाइज नहीं कर सकते हो. I have seen that if I don't have adequate sleep, I cannot get up in the morning and perform in the gym. You cannot do it. So then what happens? You tend to relax. So आज लेट हुआ रात को, आज जिम नहीं जाना है तो बैठ जाएंगे घर पे. Then they tend to eat more. So the stress indirectly affects your other patterns, जैसे खाना, सोना, all those things. Yeah, so basically हम जब ये लाइफस्टाइल फैक्टर्स की बात कर रहे हैं तो ऐसा कुछ नहीं है कि एक चीज करने से आप कर लोगे, you are preventing yourself from the risk of cancer. Basically it is all interlinked, everything, yes, and eventually coming to your body's health. Right. Yeah. So अब जैसे बात की आपने जिम का, so recently since the past 10-15 years कुछ नहीं करना है, जिम जाना है 1 घंटा 2 घंटा, ये कर लिया मैंने, बॉडी बिल्डिंग कर लिया, वो कर लिया, चलो, that is one way. Anyways it is not bad, so we'll not go into the discussion of जिम के pros and cons. बट क्या सिर्फ जिम जाना एक्सरसाइज है? एंड व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ एक्सरसाइज एंड हाउ डज इट अफेक्ट द इंसिडेंस ऑफ कैंसर? जरूर नहीं, सी एवरीवन कैन नॉट अफोर्ड, जा भी नहीं होता है, टाइम भी नहीं मिलता है जिम जाने को, जिम पास में भी नहीं होता है काफ़ी बार, क्योंकि हालांकि आजकल तो काफ़ी जिम दे आर वेरी नियर बाय, बट इट्स ओके. बट जरूर नहीं जिम जाना, यू कैन डू इट एट होम ऑल्सो. उसके लिए आपको डिसिप्लिन से उतना करना पड़ेगा, हाफ एन आवर, 45 मिनट्स, 15 मिनट्स ऑल्सो इन अ डे. If you can do that much exercise, it's good enough, but it has to be regular. Okay. आज नहीं किया, 2 दिन बाद करेंगे, फिर अगेन परसों एकदम आधा घंटा कर लेंगे और 1 घंटा एकदम कर लेंगे. That is not the proper way of doing it. It has to be regular. But yes, so does exercise decrease your chance of getting cancer?
Difficult. There's no direct correlation. Not exercising, yes. Okay, if you don't Exercise, exercise, there are yes, chances. yes. Okay. So there was a recent article in Cancer Journal. How much is the adequate exercise? जिससे आपका risk of other factors related to stress and all. See, exercise reduces your stress, obesity, everything. So how much is that amount of exercise? So they recommend 45 minutes of exercise regular, at least 5 days a week. Now this 45 minutes could be ideally they say brisk walking. आमतौर पर यू सी पीपल वॉकिंग दे आराम से टहलते हैं हवा खाने के लिए डिनर के बाद जाते हैं मुखवास खाते होते हैं इधर उधर दैट इज नॉट द एक्सरसाइज Okay. सो इट हैज टू बी आपको पसीना आना चाहिए Okay. Brisk walking, ब्रिस्क fast वॉकिंग walking. एज मच एज यू कैन डू Okay. मतलब हाँ, तो when we come here, so एक है walking, एक है brisk walking, एक है running. ठीक है, तो what is the best amongst these? all are will be same. If you are young, you don't have joint problems, running is equally good. Running Okay. may maybe your time will be less. Instead of walking for 45 minutes, maybe 20 minutes of good running, a good decent jog will be good enough. So that depends on your capability, your heart and all that. I think so. Whatever you can do consistently Do it is consistently. more important. हाँ, that is more important. मैं ये नहीं कर सकता, नहीं कर रहा हूँ, वो छोड़ना नहीं है. आप जो consistently daily हाँ. कर सकते हो, if you are comfortable with running, do 20 minutes of running. If you are Hmm. comfortable with brisk walking, do 45 minutes of brisk Brisk walking. walking, that's all. Yeah. Even if you don't want to lift weights, Hmm. body नहीं बनाना है. ठीक है. I think everyone needs that 1 hour, and they need to give that work-life For- personal balance For yourself. for yourself. That's very important. And that has to be at least from what age they should start? Young age, young adults. Unfortunately, young adults करते नहीं exercises because they think they are fit. It should start in 20s only. Okay. 18, 20s में. So if You have to invest in your health. Okay. Instead आप बोलते कि invest करो इधर करो, but it is also an investment. Right. So that is important. मतलब अगर आप अभी बहुत सारा इन्वेस्ट नहीं करते हो, if you don't look after your body health, and if when you are 50, और अभी आप बहुत सारा चलो काम ही कर लेते हो, या फिर आप बहुत सारा एंजॉयमेंट कर रहे हो, योर वट एवर यू आर डूइंग, बट व्हेन यू विल बी 50, जो आप अभी कर रहे हो वो शायद नहीं कर पाओगे. Right. यू हैव नॉट इन्वेस्टेड इन योर हेल्थ. एंड अगर इन्वेस्ट किया है, तो द लॉन्गर यू लिव, द हेल्दियर यू आर, यू विल बी Yeah. having more time to do what you want to do, maybe then. Right. So when you are starting your career, maybe आपके पास इतने पैसे नहीं, but what do you have? You have time, you have a young body. To exercise, use it, no? Exercise it. Invest in your health. Then you start earning. When you are 50s, 60s, you will have a good body. You will enjoy what you have earned money wise. आपको 50, 60 में एक्सरसाइज की नहीं है, आपके जॉइंट्स ऑलरेडी सब आवाज कर रहे हैं, योर स्पाइन इज पेनिंग, यू डोंट हैव नहीं जाना है, यू नो दोस्त, मतलब क्या इतना कमाने का, फिर यू डोंट एबल टू एंजॉय इट. Right. So basically, when we talk about, and when we wrap up our segment on lifestyle, we have discussed about diet, obesity, somewhat about sleep, stress patterns and exercise. मतलब ये सब interlinked है, और ये आप जो आपकी बॉडी के साथ बिहेव करते हो, right from when you are 18, 20 up to 50, if you are doing this all fine in this 30 years, somewhat fine, of course 100% तो कोई perfect कर नहीं सकता, then maybe that consistent effort of 30 years will decrease your chance of getting cancer. Definitely, yeah. That is proved. एक चीज करके कुछ नहीं होने वाला है, Not one then. थोड़ा टाइम के लिए करके कुछ नहीं होने वाला है. So it has to be a habit which is inculcated in you. So then the body will also have a lot of good healing mechanisms. Right. There will be a lot of lesser mutations which will be occurring. Right. It will be feeling more healthier. So that is the inference from Yeah, this. yeah, right. And that is what we are not focusing on as a society. But I think as the awareness grows, and there are a lot of influencers, there are a lot of other products which are coming up and everything, so now people are starting to talk about this कि हाँ Right. ये important है. Yeah. And when as an expert you say that, I think it makes it more clear. But जो एडिक्शन होता है, सिमिलरली काफी लोग बोलते हैं एज ओल्ड कमेंट, मेरे ये फूफा जी है कि ये है तो 40 साल से स्मोक कर रहे हैं, तो 50 साल से स्मोक कर रहे हैं, इनको कहाँ कुछ हुआ, और ये है इन्होंने कुछ नहीं किया लाइफ में, साधु जैन. और इनको कैंसर हो गया, आप कैसे बोल रहे हैं ऐसे एडिक्शन से कुछ नहीं होता है. मतलब इट इज दैट सुपर ईगो बूस्ट which a lot of people have. कुछ नहीं होता है, अभी क्या है, ये डराते हैं डॉक्टर्स. So anything you would like to say on that? So again, that is आपकी क्वेश्चन सही है कि we don't know why किसी को नहीं होता है, किसी इवन
हमने देखा जैसे जैन साध्वी जी हो तो उनको भी कैंसर होता है, ब्रेन ट्यूमर, ब्रेस्ट कैंसर। साधु लोगों को भी होता है, उनको होता है। एंड जो एकदम पूरा लाइफ में पूरा उनका मेस होता है लाइफ में, तो उनको उनको कुछ नहीं होता है। सो दैट इज सो डिफिकल्ट टू से। पर एक चीज़ है कि जितना आप यंग एज में एडिक्शन चालू करें, जैसे मसाला तंबाकू खाना, तो उतना आपको चांसेस ऑफ कैंसर बढ़ जाते हैं। वन रीज़न दे से इज़ बिकॉज प्रॉब्ली आपके अंदर में कुछ जेनेटिक इंस्टेबिलिटी है ही पहले से, जन्म से। और आप अगर ये सब मसाला वगैरह खाते हैं, उससे थोड़ा सा वो इंस्टेबिलिटी बिकम्स मोर अनस्टेबल, then you would probably tend to develop cancer. That is one of the reasons that this is a theory. राइट। मतलब हम जब स्टडीज में भी जाते हैं तो 100 लोग अगर स्मोक करते हैं 100 को कैंसर नहीं होने वाला, बट उनमें से शायद 15 लोगों को होगा। बट 100 लोग अगर नहीं स्मोक कर रहे हैं तो उसमें से भी 5 लोगों को तो होने वाला है। होने वाला है, यस। सो हम वो 5 लोग और 85 लोग को नहीं पकड़ सकते। वी कैन नॉट आइडेंटिफाई talk about those 5 people Right. who are developing cancer, though they are not addicts, and those 85 people who are not developing cancer who have addictions. We should focus on कि इसमें 5 को ही हो रहा है, उसमें 15 को हो रहा है, मतलब आपका चांस ऑलमोस्ट ट्रिपल हो जा रहा है। सो दैट इज व्हाट यू शुड फोकस ऑन। ऐसे जब कोई सर्जरी करने के लिए आते हैं तो काफी लोग पूछते हैं कितना रिस्क है, तो हम बताते हैं 10% रिस्क है, 5% रिस्क है। तो तब वो सोचते हैं कि हम वो 5% या 10% में आ गए तो पर जब एडिक्शन करते तब नहीं सोचते कि हम वो 15% में आ गए तो कि जिनको होने वाला है। आई थिंक दैट माइंडसेट शुड चेंज एंड देन पीपल विल स्टॉप, आई थिंक, कंज्यूमिंग ओनली। अगर एज अ सोसाइटी इफ वी स्टार्ट हैविंग दैट माइंडसेट। जब हम गुजरात की बात करते हैं तो as you say कि जो तंबाकू खाना है, it has been inculcated so deep into the roots. हाँ, it is a normal thing. जैसे हम मिठाई खाते हैं, ऐसे मसाला खाते हैं। And due to that, it is proven that we have one of the highest incidence of oral cavity cancer in the entire country or maybe the entire world. So ऐसा नहीं है कि नहीं है, it is all visible, दिख रहा है लोगों को। बट हाँ, ऐसा भी दिख रहा है साथ में कि ये खा रहा है, इसको कुछ भी नहीं हुआ है। I think that has to change. Right. How much influence does pop culture or other things or the celebrities that are promoting they have on the mindset of people? जैसे जो एडवर्टाइजमेंट्स है वगैरह, या हाँ, दैट इज वो काफ़ी यंग एज में जो है ना, व्हाट यू कॉल गलीबल या ससेप्टेबल जो यंग एज है, 12, 13, 14, उनको जो हीरोइक कल्चर, व्हेन दे सी बिग एक्टर्स प्रमोटिंग से रजनीगंधा और व्हाट इज दैट some केसर, what that advertisement होते हैं लोग, हाँ, so they feel great, या स्मोकिंग, हाथ में सिगरेट ऐसे खड़े हैं, so that sort of thing, that's basically young people are the one who, वहाँ से प्रॉब्लम चालू होता है। It is at young age where the habits develop. Okay, that is the issue. And also as a recent trend, so I'm not talking in any controversial point of view, but the number of addictions that we were seeing in females was relatively less, particularly on smoking and the tobacco consumption. When I talk about, we'll leave alcohol to a side for now, but mainly the mainstream smoking and tobacco, because that is related to, I guess, more than 22 cancers. So what is your comment regarding that? So again, जैसे हमने बोला, smoking is a risk factor, so the incidence of smoking is increasing in females as a what is a pop culture. So if you don't smoke, you're not in that peer group. आपको ग्रुप में से बाहर निकाल देते, you feel that you should be in that group, so they want to identify with a particular modern group, so they smoke, so they catch it early. And masala tobacco, yes, the ladies consume a lot of it, and ऐसा नहीं कि नहीं है, we see many ladies been coming with cancers and they have been addicts to this रजनीगंधा, सुपारी, कोटेड सुपारी, व्हाट नॉट, रात को वहाँ कुछ वो लगा के सो जाते हैं, so that is there, so that is there in females, definitely it is there, it is not reported so much. नहीं, when we talk 20 years earlier, तो उस टाइम पे कुछ ऐसे कैंसर है जैसे लंग कैंसर है, ओरल कैविटी कैंसर है, इवन टिल प्रेजेंट डे उसका मेजर रीजन कि वो मेल्स में ज्यादा होता है, वो है कि मेल्स ज्यादा एडिक्ट होते हैं। बट नाउ एज वी सी इवन फीमेल्स आर गेटिंग एडिक्टेड टू ऑल ऑफ दिस थिंग्स, मे बी, एंड वी हैव ऑलरेडी स्टार्टेड टू सी कि वो इंसिडेंस भी बढ़ ही रहा है। द predominance of males have decreased and females are also getting so many cancers.
right? Yeah, so US में देखा है the female cancers initially they were increasing because of smoking, lung cancer, but अभी that would reduce it. India में it is increasing because Okay. more and more young, we have a young population, young generation, so they tend to consume party culture, pop culture, smoking and whatnot, other things are all going on. So because of that, then they get addicted. So that is why it is lung cancer is increasing in females also in India. And there are certain things, like particularly when we talk about two cancers, which only female would get. So there are gynecological cancers, which itself includes 6 different types of cancers: ovary, uterus, cervix, and even breast cancer. So separate cancers, when you talk about males, they are only maybe prostate and testes and penis. Lung to इनका some extent. नहीं, the organs which Organ, are just specific. so those cancers are also related somewhere to smoking also, as we know. Yeah. And are females genetically more susceptible to mutations, something like that, related to addiction, or I don't think there is any data for that. okay, Not that they are susceptible. okay. Now that we had talked about addiction, now we come to environment. Now अभी recent discussion में बहुत है कि दिल्ली का air quality index is so bad. But when we see even in Ahmedabad, Yeah, उतना ही. or you go to Mumbai, you see the sky above, and when you go to a third, second tier, third tier, or a village, when you go to the sky above, you see drastic difference. आसमान देख के ही पता चल जाता है कि कितना वो है. तो कहाँ बैठे हो? हाँ, मतलब वो जो pollution है, definitely pollution, and we are breathing that air every day. So even there are studies which have come out. So does that impact? The longer term may be impacting on the lung health, and I don't know about cancer, but there is no proved data. If you really see दिल्ली में जो pollution हो रहा है उसके वजह से कैंसर बढ़ा कि नहीं, we don't know now. Maybe 10 years later we'll know it has increased, because now this is all epidemiological data. So आज जो उनको exposure हो रहा है because of pollution all that, उसकी effect you will not see in 1 or 2 years. You may see after 10 years. So it's little early to say क्या होने वाला, but yes, लंग हेल्थ विल डिटोरेट, योर अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, वो सब नॉन कैंसर वाले जो बीमारी हो तो बढ़ने वाली है. कैंसर के बारे में डिफिकल्ट टू से वेदर पोल्यूशन से डायरेक्टली कैंसर होने वाले की, दैट इज देयर. मतलब दैट इज द थिंग अबाउट कैंसर, तुरंत कुछ बोल ही नहीं सकते. यू कैन से 10 years डाउन द लाइन कुछ स्टडी आएगा WHO या कहीं से कि यस बिकॉज ऑफ पोल्यूशन दिल्ली में कैंसर बढ़ गया, एंड देन इट्स टू लेट. देन इट्स टू लेट. राइट नाउ वी ओनली कैन टॉक अबाउट लॉजिक, राइट, एंड लॉजिकली इट सीम्स कि हाँ इससे इम्पैक्ट आएगा, आ सकता है, आएगा या. बट राइट नाउ वी डोंट नो ऐसे व्हाट इज, एंड दैट इज द थिंग अबाउट कैंसर एनीवेज कि आप इमीडिएट आपको रिजल्ट या बैड रिजल्ट, गुड रिजल्ट दिखता नहीं है. सो यू आर लिविंग इन दैट cocoon कि शायद कुछ नहीं होगा. राइट. सो दोज अबाउट द डिफरेंट कॉजेज. नाउ द मेन थिंग जो लोगों के माइंड में होता है कि ये तो जेनेटिक होता है. हाँ, तो जेनेटिक होता है. आप बताएंगे कि कितना % जेनेटिक होता है, और जेनेटिक जो केसेस है क्या वो भी बढ़ रहे हैं कि? सो जेनेटिक कैंसर्स फ्यू होते हैं, जैसे लेडीज में देखा है ब्रेस्ट टू सम एक्सटेंट, ओवेरियन कैंसर है, देन इफ यू टेक इंटेस्टाइनल कैंसर्स वहाँ जेनेटिक होता है, एंडोमेट्रियल टू सम एक्सटेंट, यूट्रस का कैंसर. देयर आर अदर फ्यू कैंसर्स वेयर जेनेटिक जीन्स आर इम्पॉर्टेंट, जो फैमिली में आपको वारसाई में जो सब मिलता है दैट इज देयर. सो दीज आर कॉल्ड जेनेटिक कैंसर्स व्हिच आर in a way what you call hereditary cancers, because there's an abnormality in the genes. But otherwise other cancers like if like just lung cancer में there is no correlation, brain tumor में ऐसा कुछ नहीं, head and neck में मसाला तंबाकू में genetic factor नहीं है. So specific some factors risk of increase, for example BRCA करके gene है, so that increase the risk of cancer maybe 20% 40%, depends on which gene it is. breast cancer के लिए, ovarian cancer के लिए भी. सो ये जो जेनेटिक्स है, जीन्स है जो म्यूटेट हो रहे हैं, क्या वो ही अपने आप ज्यादा म्यूटेट हो रहे हैं जिसकी वजह से जेनेटिक कैंसर्स भी बढ़ रहे हैं? क्या वो भी एक रीजन है कि वी कैन नॉट से? नो, वी कैन नॉट से दैट म्यूटेशंस बढ़ रहे हैं कि पता नहीं, बट मे बी इंसिडेंस वी आर एबल टू डिटेक्ट. आजकल प्रॉब्लम नाउ द थिंग इज दैट आजकल लेबोरेटरी डायग्नोस्टिक्स है, तो नाउ वी आर एबल टू आइडेंटिफाई, चलो ये फैमिली में 3 लेडीज को ब्रेस्ट ओवेरी कुछ हो गया, तो नाउ वी कैन आइडेंटिफाई कि इनको जेनेटिक है. पहले वो नहीं था 10 साल पहले. ओके, हाँ, सो मतलब उसकी वजह से हमको लग रहा है कि जेनेटिक कॉज उसके बजाय बढ़ रहा है ऐसा लगता है. ओके, सो रिसेंटली किसी ने WHO या समवन दे इशूड अ स्टेटमेंट दैट जिस हिसाब से कैंसर बढ़ रहा है we might have an epidemic of cancer by 2050. Yeah, 2050 हम तो नहीं देखेंगे, but you will be there. So
Yes, that is what they predict. Maybe they are right also because of that's what I said. जो pollution की बात हुई दिल्ली में आज जो हम inhale करें the air today nothing will happen but maybe 10-15 years down the line when 2050 will come you will see a sudden increase in the lung cancer in India maybe Okay. which is in a way they are right also what WHO has predicted कुछ उनके formulas होंगे. Yeah, और हमारी भी जो लाइफस्टाइल है, Hmm. हम इनिशियली ह्यूमंस दे वर स्ट्रगलिंग टू सर्वाइव, और Right. वो जो भी थे दे यूज्ड टू बी इन जंगल्स, फिर धीरे धीरे वी केम टू मॉडर्नाइजेशन, नाउ वी हैव कम टू सिटीज एंड अर्बनाइजेशन, Hmm. so we have become more and more dormant, Yeah. more and more comfortable with our life. Okay, we are trying to make it more and more different in other way, but तो वो एक पॉइंट आ गया. दूसरा जो एनवायरनमेंट उसकी वजह से जो है, so all of this holistically are playing a role together due Yeah, to yeah. which we are seeing this. Cancer का है. So एक ही factor से भी नहीं as you said multiple factors are involved. And right now is that maybe period of that generation के वो टाइम चल रहा है इतने सालों के बाद जब ये सब एक साथ हुआ है, and that is why No. we are seeing a sudden. Right. Could be. Okay, so we have had a good discussion. Yeah. We have covered a lot of areas कि जो लोगों को जानना चाहिए. So as we end this on a closing note, I would like to thank you for sparing Thank your you. time and coming here for the betterment of everyone. So as a closing note, आप कुछ कहना चाहेंगे to our viewers कि जो चीज़ उनके कंट्रोल में है, काफ़ी चीज़ें उनके कंट्रोल में नहीं है, the environment, genetics, और जो चीज़ उनके कंट्रोल में है वो ऐसा क्या करे जिसके बेसिस पे उनको कैंसर होने के चांसेस कम हो जाते हैं ओवर अ टाइम. या थैंक यू. सो एज डॉक्टर वीर ने बताया कि आप कहाँ जन्म ले रहे हो आपके कंट्रोल में नहीं है बट यार आपका जो कंट्रोल में है वो 2-3 चीज़ें बताना चाहता हूँ. वन इज डिसिप्लिन. तो डिसिप्लिन 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 3 बार मैं बोल रहा हूँ. डिसिप्लिन एवरीथिंग स्लीप एक्सरसाइज सब में डिसिप्लिन चाहिए. देन अनदर थिंग इज लर्न टू से नो. लर्न टू से नो मीन्स आपके लिए भी नो और दूसरों के लिए. शुड लर्न टू से नो टू पीपल अराउंड यू एंड लर्न टू से नो टू योर सेल्फ. That is one. And most important is of course diagnose करना early है कैंसर तो you have to get yourself checked early. ऐसा नहीं कि बस हम खा रहे हैं मसाला स्मोकिंग करें पर कुछ इन्वेस्टिगेशन नहीं करें. That is also important to do. So regular checkup, good discipline, learning to say no. ये 3 चीज़ें I think will help you a lot. Yes. So thank you sir. So जैसे सर ने बताया कि आप क्या करते हैं और जैसे हमने डिस्कस भी किया कि आप अगर वो डिसिप्लिन कंसिस्टेंटली मैनेज कर पाते हैं अपनी बॉडी के साथ, when your body requires it the most, when your body is going through so much stress, particularly the age group of 18 to 50, maybe you will be able to decrease your chance of getting cancer. Thank you so much for that insight sir. And to our viewers, आप लोग जहाँ पे भी ये पॉडकास्ट देख रहे हैं या सुन रहे हैं, I would request कि if you like our podcast, please subscribe to our channel and share it with whosoever you might think might get benefit from listening or watching to this. Thank you. Thank you so much. Thank you. Thank you.